Vak vak om prana prana om chakshus chakshu om shrotram shrotram om nabhi om hridayam om kantha om shira om bahubhyam yashobalam Om Karatal Karaprishthe Om Bhupanatu Shirasi Om Bhuva Punatu Netrayo Om Swaha Punatu Kanthe Om Maha Punatu Hridaye Om Jana Punatu Navyam Om Tapah Punatu Padayo Om Satyam Punatu Punashirasi Om Kham Brahma Punatu Sarvatra Om Bhu Pranayam Mantra. Take a deep breath, chant the mantra in one outflow, and retain the breath outside, and we'll repeat this 3 times. Bahya Pranayam. Retain the breath for as long as you can, and the slightest feeling of discomfort, you start deep inhale. Om Bhu Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Jana Om Tapa Om Satyam. Om Bhu Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Jana Om Tapa Om Satyam. Om Bhu Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Jana Om Tapa Om Satyam. Om Retancha Satyancha Vidhata Pasudhyajayata Tato Ratriyajayata Tatah Samudro Arnava Om Samudradarnavadadhi Sanvatsaro Ajayata Ahoratrani Vidadhadvishwasya Mishato Vashi Om Surya Chandramasau Dhata Yatha Purvam Kalpayat Divancha Prithivin Chantarikshamatho Om Shanno Devi Rabhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyorabhi Sravantuna. This mantra leads us to pray to Almighty, Omnipresent God for Abhisht, Sansarik Sukh, worldly fulfillment, and Piti, eventually the spiritual bliss. Will attain to that. Iske liye Purna Purusharth, we need to put up all our physical and mental efforts. Manasa Parikrama mantra is there to indicate to us ईश्वर को हम अपने चाहों और महसूस करें. Feel the presence of God inside and all around us. In front, on the right hand side, back side, left hand side, up and down,
like we are surrounded by God everywhere. हम ईश्वर के अंदर में बैठे हुए हैं और ईश्वर हमारे चंगोर है। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायिषुभ्यो नमायिभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरष्टिराजीरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमायिभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपति प्रिदाको रक्षितन्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायिषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायिषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णोरधिपति कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमायिभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायिषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरोत्तमम्। ॐ उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्रद्या वा पृथिव्यन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थूषश्च स्वः। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समर्पण मंत्र। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन। नमस्कार मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च। ओम शांति शांति शांति।
Atheshwara Stuti Prarthana Upasana Mantra. Stuti, praising God so that when we praise the virtues, we'll be able to imbibe them in our life and in turn be virtuous. Prayers, Prarthana, Purusharth ke bina Prarthana kabhi safal nahi hota hai. So we need to put up all the physical, mental efforts to realize the goals of our prayers. And Upasana is communion with God. So sit down in silence, in meditation, contemplation of that Almighty Ishvara. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasava Yad Bhadram Tanna Asava Om Hiranya Garbha Samavartatagre Bhutasya Jatah Patirekāsit Sadādhāra Prithivim Nyamute Mam Kasmai Devaya Vishavidhema Om Ya Atmada Balada Yasya Vishwa Upasate Rashisham Yasya Deva Yasya Chayamritam Yasya Mrityu Kasmai Devaya Vishavidhema. This mantra we are praying to God to give us that physical and spiritual strength, so that at the end of this life cycle, we'll be able to trip the cycle of birth and death and be in the eternal bliss of God. Yasya Chayamritam, which is moksha or mukti. Om Yah Pranato Nimishato Mahitvaika Idra Rajagato Babhuva Yaishe Yasya Dvipadashcha Tushpada Kasmai Devaya Vishavidhema. वह परमात्मा कैसा है? महित्वैका इद्राजा, एक राजा है, one and only ruler of this universe, and ruling over all living and non-living beings. Dvipadash Chatushpadaha, bipeds and quadrupeds. This is in the physical Adhibautik earth, but Adhyatmic earth, bipeds are those who only earn a living and enjoy life, and the quadrupeds in the spiritual sense are those who walk on the path of dharma, righteous living, artha, righteous earnings, kama, righteous enjoyment of life, and eventually progress unto mukti, moksha. Om ye nadyauragra prithivi chadridha ye na swasta bhitam ye na naka Yo antarikshe rajaso vimana kasmai devaya vishavidhema. Om prajapati natvadetani vishvajatani parita babhuva yatkamaste juhumastanno astu vayam Syama Patayorainam. This mantra says, Vayam Syama Patayorainam. We are praying for the grace of Almighty Ishvara to be prosperous, both on the material and the spiritual side. Because both of these are like the dual tracks of the railway line. We need both of them to be ethical in life and progress both materially and spiritually. Om Sano Bandharajanita Savidhata Dhamani Veda Bhuvanani Vishwa Yatra Deva Amrita Manashana Striti Dhaman Adhyairayanta Om Agnena Yasupatharaya Yasman Vishwani Deva Vayunani Vidwan
Yuyodhyasmadjoranameno Puishtante Namauktim Vidhema. Yuyodhyasmadjoranameno, repeating the same prayers as in the Vishwani Deva mantra, the first one. अपने कुटिल पापों को दूर करने के लिए प्रयास करें. God giving us only the inspiration, we have to walk the path. And then Vishrani Deva Vayunani Vedon. We'll be surrounded wherever we be in this world with learned and knowledgeable persons who, by sharing their life experiences and life knowledge, will lead us to the righteous path in life. Today, we are gathering around, especially during this Sunday Satsang, Shanti Yad, remembering and celebrating the life of late Dr. Shrived Agarwalji. Who lived a whole cycle of 87 years of life. Well-known pediatrician in Houston, but also well-known philanthropist with his selfless service dedicated to children. And last but not least, a stalwart of this Arya Samaj Greater Houston. Yajman for today is Srimati Santosh Ji Agarwal, the spouse of late Shrived Agarwalji, daughter Renu Agarwal, and son Rajesh Ji. Artsman, please take water in the right palm, sipping 3 times. Each time take water and then sip at the end when we say Swaha. Beech mein nahi kar. Om Amritopastara Namasi Swaha. Second time. Om Amrita Pidhanamasi Swaha. Third time. Om Satyam Yashah Shirmahi Shayatam Swaha. Wipe your hands in the paper napkin and then please take water in the left palm for Angsparsh, touching of various parts of the body with water. Water signifying purity, pledging to keep our body, mind, spirit pure, and praying to Ishwar God to grant us the good health so that all these body parts be helpful to us to engage in the righteous path of life. It's always on your right-hand side and then on your left-hand side, please. Om Vangmasyastu, mouth. Om Nasorme Pranastu, nose. Om Akshanorme Chakshurastu, the eyes. Om Karniyorme Shrotramastu, the ears. Om Bahurme Balamastu, shoulders. Om Urvorma Ojustu, the knees. Om Arishtani Vengani Tanustanvame Sahasanto, sprinkle over yourself. Lighting of the 5. Om Bhur Bhuva Swaha. At the end of the next mantra, place the lighted camphor in the center of the Havan Kund. Om Bhur Bhuva Swaha. Dyovriva Bhumna Prithiviva Varimna Tasyaste Prithivi Deva Yajani Prishthe Agni Mannada Mannadyaya Dadhe. Agni Samindhan mantra to get the fire blazing. Please offer 2 free spoonfuls of ghee to the fire. Om Udbudya Svagne Pratija Grihi Tvamishta Purte Sansrije Thamayancha
अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. Samidha dan, samidha, the wood sticks dipped into ghee. पहली समिधा इस मंत्र में स्वाहा बोलने के बाद, क्रिया जो भी करना है वो मंत्र में स्वाहा आने के बाद, not before the स्वाहा. First समिधा. ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदम् नमः. Second samidha, we have two mantras here. It's on the second swaha. दूसरे स्वाहा पे हम आहुति देंगे. ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोर्दयतातिथिम् अस्मिन् हव्यजुहोतन स्वाहा इदम् ग्नैदं नमः. ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः. तीसरी समिधा. ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठिय स्वाहा. इदम् अग्नयंगिरसे इदं नमः. पंचघृत आहुति. घी की आहुति चलेंगे. ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः. ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः. ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः. ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः. ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा. इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः. Jal Sechana. On the east side first, at the end of the mantra, not in between. Om Aditenu Manyasva. Second on the west. Om Anumatenu Manyasva. Third north. Om Saraswatyanu Manyasva. All around the Havan Kund, still at the end of the mantra. ओम देवः सवितः प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूखे तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु. घी क्या होती? पहले उत्तर, फिर दक्षिण, फिर मध्य में. North, south, then third and fourth would be in the center. ओम अग्नये स्वाहा. इदम् अग्नये इदं नमः. ओम सोमाय स्वाहा. इदं सोमाय इदं नमः. ओम प्रजापतये स्वाहा. इदं प्रजापतये इदं नमः. ओम इंद्राय स्वाहा. इदम् इंद्राय इदं नमः. ओम भूरग्नये स्वाहा. इदम् अग्नये इदं नमः. ओम भूर्वायवे स्वाहा. इदं वायवे इदं नमः.
ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः स्विष्टकृत आहुति ओम यदस्य कर्मणोऽत्यारीरीचं यद्वान्योन्मिहाकरम् अग्नेष्ट श्रेष्ठ कृद्विद्यात् सर्वं श्रेष्ठं सुहुतं करोतु मे अग्नये श्रेष्ठ कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वाणः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये श्रेष्ठ कृते इदं नमः घी की आहुति ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः पवमानीय आहुति सिरघी ओम भूर्भुवस्वः अग्न्यायुंषि पवस्वा सुवरजमिषं सनः आरे वादस्व दुक्षुणां स्वाहा इदम् अग्ने पवमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्व अग्निरीषि पवमानः पांचजन्या पुरोहितः तमीमहे महाज्ञं स्वाहा इदम् अग्ने पवमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्व अग्निपवस्वसपास्मे वर्चस्वीर्यं ददद्रयीमयि पोषं स्वाहा इदम् अग्ने पवमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्व प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः अष्टाध्याय आहुति नाउ बोथ घी एंड सामग्री दोनों घी और सामग्री की आहुतियां ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलोवयासिष्ठा यजिष्ठो वहनीतमाशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः ओम स तन्नो अग्ने भूमो भवति निदिष्ठो स्य उष्णो व्योष्टौ अवयक्षणो वर्णं व्रणानो व्रीमिदीकं सहो नैधि स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः ओम इमं मे वर्णाशुधीरमद्य चामडाय त्वां वस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मा वन्दमानस्तदाशास्ति यज्मानो विरभे अहेडमानो वर्णे अबोधुरुषन् समानायु प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम ये देशतं वरुणाय सहस्रं यज्ञा पाशा विततामहान्ता ते विर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मर्तः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विष्णुभ्यो देवेभ्यो मर्देभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ओम मयाश्चाग्निस्यन्भिः सस्तीपाश्च सत्यामित्वा मयासि अयानो यज्ञं वहस्य यानो देहि वेसजं स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ओम उदूतं वरुणपाश्मस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथावयामादित्य व्रते तवानागसोदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय आदितये च इदं नमः ओम भवतन्नः समनसौषते तसावरे पासौ माय जंहिं शिष्टं माय जपतिं जातवेदसौ शिवो भमद्यन्न स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः As per Sanskar Vidhi, Maharishi Dayananda has given the instructions. Whenever we do Havan in remembrance, Shanti Yaj, or the 3 days Havan, which is prescribed after the Antyeshti Sanskar, we should do special ahutis with Swasti Vachan and Shanti Karan. तो आज प्रतीकात्मक रूप में 3-4 मंत्र स्वस्ति वाचन का और 3-4 मंत्र शांतिकरण के हम लेकर के विशेष आहुति देंगे। ओम अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही स्वाहा
ओम आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासु परितासोद्भीदा देवानो यथा सदमिद्वृधेय सुन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजो यतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदि मा वयं देवानायु प्रतिरन्तु जीवसे स्वाहा. So the mantra Swasti Pantha Manucharema is guiding us to be always on the path of dharma. Like the sun and the moon never deviates from the path. Let's not deviate. हमारे वैदिक संस्कृति कहता है रास्ता सीधा है हमारे सामने बस चलना है. Unlike others which say रास्ता तेरे मेरे है आपको रास्ता ढूंढना है. हमारे यहाँ रास्ता नहीं ढूंढना है, रास्ता सीधा है, धर्म का मार्ग है. Then Ano Bhadra and Devanam Bhadra Sumati Rejunetam. It sums up to let noble thoughts come to us from all sides. But we first need to be givers and then we'll receive multifold. Swasti Vacham ke 3-4 mantra. Om Shanna Indragni Bhavatam Vobhi Shanna Indra Varunaratahavya Shamindra Soma Savitaya Shanyo Shanna Indra Pushanavad Sato स्वाहा ओम शन्नो भग शमूनः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धीशमुसन्तुराय शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु स्वाहा ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि स्वाहा ओम यज्जाग्रतो दुरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा ओम सुषारथीरश्वानि वयन्मनुष्यने नियते भीषुभिर्वाजिन्नैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं दविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा ओम अभयं मित्राद अभयं अमित्राद अभयं जाताद अभयं परोक्षात् अभयं नक्तं भयं दिवानः सर्वासां मित्रं भवन्तु स्वाहा. This mantra brings us to being fearless towards both the known and the unknown. मित्र जिसको हम जानते हैं और अमित्र जिसको हम नहीं जानते, उनसे दोनों स्थिति में अभयता पूर्वक हमें काम चलाना है. And you know what is the most feared thing in life? अभिनिवेश, मृत्यु का जो भय, the fear of death. And this is sure to happen to every single being that is born in this universe. So that's why I've chosen this mantra, which shows to us abhayita purvak in all situations and no fear for death, because that is bound to happen. Pratakalin mantra. Om Suryo Jyotir Jyoti Surya Svaha. Om Suryo Varjo Jyotir Varja Svaha. Om Jyoti Surya Suryo Jyoti Svaha. Om Sajur Devena Savitra Sajurusha Chendravatya Jushana Suryo Veto Svaha. Sayankalin mantras. Om Agnir Jyotir Jyotiragni Svaha. Om Agnir Varjo Jyotir Varja Svaha. Om Svaha. Om Sajur Devena Savitra Sajura Trindavatya Jushano Agnir Veto Svaha. The next series of mantras guide us. लंबे सांस लेकर के पूरा मंत्र बोलना. प्राणाय स्वाहा, पनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा.
If we are able to synchronize this very main life forces, life breath in our body, we'll always be staying healthy. Om Bhuragnaye Pranaya Swaha Idam Agnaye Pranaya Idam Navama Om Bhurvaive Pranaya Swaha Idam Vaive Pranaya Idam Navama Om Suradityaya Vyanaya Swaha Idam Adityaya Vyanaya Idam Navama Om Bhurvaswaragnivaye Vaditevya Pranapan Vyanabhya Swaha Idam Agnivaye Vaditevya Pranapan Vyanabhya Idam Navama Om Apo Jyotirasomritam Brahma Bhurvaswarom Swaha Om Yam Medham Devagana Pitarashtopasate Tayama Madhyamedhaya Agni Medha Vinankuru Swaha Om Vishwani Deva Savitar Durtani Parasva Yad Bhadrantanna Sva Om Agnena Yasupatara Yasman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjora Namino Bhuishtante Namoktim Vidhema Sva गायत्री मंत्र सभी लोग मिल करके बोलेंगे. I'll be reducing my volume of my voice, the volume of my voice, and I want to hear the voice of each and everybody. जो Zoom के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप भी अपने माइक को म्यूट करके बस मंत्र हमारे साथ एक स्वर एक लय में बोलने के लिए प्रयास करें. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. पूर्णाहुति. ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा. ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा. ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा. पात्र सब नीचे रख दें, हाथ जोड़ लेंगे. महावाम दैवीगान सामवेद के 3 मंत्रों के माध्यम से praying to Ishwar God for sukha, happiness, shanti, peace, samriddhi, prosperity. Om Bhurbhuvah Swaha Kayanashchitra Bhuvadoti Sadavridha Sakha Kayashachishtaya Vrita. Om Bhurbhuvah Swaha Tastva Satyo Madanam Mangishto Matsadandasa Dridachidarujevasu. Om Bhurbhuvah Swaha Abhishona Sakhinam Avita Jaritranam Shatam Bhavasyutaye. Om Bhurbhuvah Swaha. Yajya Prarthana.
Again, just for reminder, we are here today, especially for this Shanti Yaj, in remembrance of and celebrating the life of late Dr. Sri Ved Agarwal ji. Yajman for today was Srimati Santosh D. Agarwal, the spouse, and the daughter Renu ji and son Rajesh ji, who joined us on Zoom. They couldn't make it for today, being outside Houston. So let's join everybody in prayers to bless this family. ईश्वर इस परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति दें. May God grant them courage to move out of grief, and also pray for the Sadgati. Peaceful onwards journey. The soul is now on the next journey to moksha, mukti. The journey of perfection
on the cycle of birth and death, and continuing further till it attains mukti. Unfortunately, we fail to understand the basics of our own philosophy. We understand the principle of karma phal, and we all know rebirth is bound to occur. But we just re-echo what others say, rest in peace, or the soul goes to heavenly abode, which is not the case. Let's pray for the Sadgati of the soul. The soul is on its next journey of perfection till it attains moksha, mukti. Om yoyam jivata sharada shatam vardhamana yoyam ayushmantah varchasvinah tejasvinah shrimantah bhuyasah. Om swasti na indro vridhashrava swasti na pusha vishraveda swasti nastaksharyo arishtanemi swasti no brihaspatir dadhatu. Om bhadram karnebhi shinuyam deva bhadram pashyemakshabhiryajatra sthirairam gaishtoshtovang sastanurbhirvyashemahi devahitam yadayu. Om Shanti Shanti Shanti. Sorry, we had a glitch on Zoom today. Hope it's resolved. आप अपने आसन ग्रहण करें. नमस्कार। आज हम डॉक्टर वेद अग्रवाल जी और अपने श्री प्रवीण गुलाटी जी की को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ भजन बोलेंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल भी नहीं गा पा रही हूँ, मेरा गला काफी खराब है। तो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव माय स्टूडेंट, माय बेटी ईशा राज विद मी, जो आपको आज कुछ भजन सुनाएंगे। आप सब साथ दे सकते हैं अगर जानते हो उन भजनों का। धन्यवाद। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। तुम बिना
ही मानूं, मैं तो केवल तुमको ही मानूं। सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको। अब तो आकर बांध धरो, अब तो आकर बांध धरो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना। खाली घट में प्राण भरो, खाली घट में प्राण भरो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। मन में दया करो, मन में आन बसो। मन में आन बसो, मन में आन बसो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो सखा तुम ही हो सखा तुम ही हो। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, से हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमे। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम,
कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हम पे कृपा करना प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना प्रभु, हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनके। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनके। प्रगट होगे नाथ मेरे, हृदय में प्यार बनके। हृदय में प्यार बनके। हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। घनश्याम छाए रहना, बन करके मेघकारे। बन करके मेघकारे। अमृत की धार बनकर, प्यासों पे दया करना।
आहार बनकर प्यासों पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वियोग में हम दिन रात है उदासी, तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी। अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रिज के वासी, हे नाथ ब्रिज के वासी। तुम सो हम शब्द बनकर प्राणों में रमा करना। तुम सो हम शब्द बनकर प्राणों में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। धन्यवाद। बेटी ईशा को थोड़ा और प्रोत्साहित कर दीजिए। सो प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। ओम। भजन सुनते सुनते समय का तो ख्याल नहीं रह जाता है। Nevertheless, we have to continue with the program. आज हम श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में I'll keep the subject on inspirations from the life of Swami Shraddhanand ji.
So let's start with one mantra. Om Uttishta Brahmanaspate Devanyajyena Bodhaya Ayu Pranam Prajam Pashum Kirtam Yajamanam Chavardhaya. This mantra leads us to pray to the all knowledgeable protector and ruler of this universe, Ishvara, God. Arouse in the minds of learned persons virtuous thoughts so that they may engage in righteous, beneficial, and benevolent actions, yajna. To sum it, Swami Shraddhanand ji, इस मंत्र का सार तो उसने जीवन में उतार दिया। हितोपदेश में एक श्लोक है, अयम नीज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदाचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। श्लोक हमें क्या दर्शा रहा है? What it is leading us to. जो सिर्फ कहता है ये मेरा है, ये तेरा है, आगे वैसे ही खींचता रहता है अपने जीवन का, ये तो मन बुद्धि वाले लोग हैं, narrow-minded people who just spend time in saying this is mine, this is yours. The really true human being is those who practice compassion, lead the life as a true human being. मानवता की जो भावना है वो जीवन में साकार करें, वरना सिर्फ मनुष्य के आकार में रह करके हम मनुष्य है इसका कोई लाभ तो नहीं, और पशु की जीवन जैसे जी रहे। Vasudhaiv Kutumbakam, this is the approach of Swami Shraddhanand, will say it in a short while. And he always said, हम सब एक ईश्वर के पुत्र हैं. He was probably the most prominent on interfaith, intercultural dialogue. By advocating this Amritasya Putra, all children of the one and only God. Puja padatti to alag alag hote hai. But let's first agree on one thing. एक भगवान है इस संसार में. Then we disagree and try to come to conclusion with the agreement. पूजा पद्धति श्रेष्ठ कौन सा है जो हमारे वैदिक सनातन धर्म पे. Continuing on that path, Swami Shraddhanand emerged as a towering figure, not only for the Arya Samaj, but for humanity at large, not only for India, but for humanity at large. क्यों? क्योंकि he stood tall among the illustrious, I won't say the stalwarts of the Arya Samaj, but illustrious thinkers, educationists, journalists, social reformers, and so many hats he was wearing. And at the same time, he spearheaded the intellectual regeneration and nationalism in India. What he himself embarked into,
he started repugnating the Indian culture with a profound negative outlook on the Indian Hindu society, like the young intelligentsia of his times. सामान्य कॉमन चीज थे। कि स्वामी श्रद्धानंद उस बहकावे में भी बहक गया था। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के बीच में इतनी कुरीतियां फैले थे, so many wrong malpractices and superstitions sticking to people. I will give you one simple example. I did the Antyeshti of two of our eminent former members of this Samaj this week. And you know what happened? One argument started. That the soul, आत्मा, उसका जन्म जो है 13 दिन के बाद होता है, 11 दिन के बाद होता है, या कितने दिन के बाद होता है, ये कहीं पे प्रमाणित नहीं है। बस we've just assumed it. 4 दिन, 11 दिन, 40 दिन, 1 साल के लिए आप शोक मनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस आत्मा का पुनर्जन्म उसे लिंक नहीं करना। प्लीज डोंट लिंक द रीबर्थ ऑफ द सोल। ईश्वर के काम में कोई देर नहीं। हाँ, अगर उस आत्मा के लिए ऐसी शरीर ना हो जो ईश्वर फिट करे या ऐसे दाम्पत्य में नहीं है, तो देन इट विल बी प्रॉब्ली इन वेटिंग फॉर सम टाइम, या दूसरे जन्म में, ताकि पूर्व जन्म जन्मांतरों के उल्टे संस्कार जो है उसको ऑफलोड कर सके, ये भी हो सकता है। But we cannot be sure, and I cannot affirm on that. 13 दिन कहां से आया, 11 दिन कहां से आया, 4 दिन कहां से आया, पता नहीं। But we believe in this and we argue. और व्यक्ति ने क्या मुझे कहा? It's not the time for your ज्ञान. And the Hindus, I say, if you react like this, it's not time for ज्ञान, I would say go to hell. Sorry for that. ज्ञान के ऊपर नहीं चलेंगे, you will अविद्या अंधकार में ढसते जाएंगे और फिर कहेंगे तमसो मा ज्योतिर्गमय। कहां से होगा तमसो मा ज्योतिर्गमय? Swami Shraddhanand started despising the Hindu faith because of such practices. And unfortunately, in his life, he started becoming an atheist. नास्तिक। क्यों? मंदिर में गया और मंदिर में वहां पे कोई राजकुमारी गई थी पूजा करने के लिए और मंदिर वाज क्लोज टू एवरीबॉडी एल्स, वीवीआईपीज। ये कैसा भगवान है जिन्होंने वीवीआईपीज और सामान्य जनता के बीच में दीवार खड़ा कर दिया, दरवाजा बंद कर दे। And you know when this change, it's only जब उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से मिले। In between, he got attracted to Christianity with all the rosy things that are preached. But the other step, on the eve of he was going to convert to Christianity, he went to meet the priest for some clarifications. Unfortunately, the priest was in an unbecoming situation with a nun, and he said, this is what you preach and you practice? Karni aur kathni mein itne antar. Remember this, kathni aur karni mein antar nahi hona chahiye. There should be no disaccord, no discord within thoughts, words, and actions. It should be perfect, total harmony.
After that, he was attracted to Islam. But then he saw the situation of discrimination against women worse than in the Hindu community. He backed out. पिताजी के वो पुलिस ऑफिसर थे and he was transferred very often. इसका गलत प्रभाव ये हुआ, in spite of the brilliant intellectual capacity of Shraddhanand, he got into wrong company, evil, the company of wrong persons, and got addicted to wine, women, and gambling. He married, and his wife was very patient, very keen, and started transforming Shraddhanand. And you know the beauty of it, पत्नी जब गुजर गई, 2 बेटी और 2 बेटे थे. पत्नी ने कितने जोर डाला मेरे जाने के बाद आप दोबारा शादी कर लें. He didn't. He assumed the responsibilities of both father and mother, and he did it well, brilliantly. बेटी स्कूल जा रही थी, convent schools, and they were told Isa, Isa, and everything, and that was linked to Ram, and children were fooled like this. They said, no, we have to start the Gurukul system of education to bring back to fold our own people. And he started Gurukul Kangri in Haridwar. And look at the selfless spirit of that person. He went somewhere for prachar, कहीं पे गए थे, स्टेशन पे वापस आए, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मुझे गुरुकुल ही स्थापित कराना, इसके लिए चंदा इकट्ठा करना है, and he didn't go home. He stayed at the Arya Samaj Mandir. जब तक गुरुकुल के लिए पैसा इकट्ठा न हो, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा. संकल्प, the pledge, and he kept to it. And he received double the amount. Establishing Gurukul Kangri, look at the role model, walking the talk. मेरे बच्चे पहले इसमें दाखिला हों. His 2 sons, Indra and Harish, were the first 2 students of the Gurukul. उस समय दोनों बच्चे तो बिगड़ गए थे. पिताजी हमें कहाँ ले जा रहे? But Swami Shraddhanand rose to against all the odds and all the spiritual decline that he went through. He rose to the level. And Indra ji likhte hain, the only regret that we both brothers have, we stood to our father when he admitted us to the Gurukul. That you can read in Mere Pita by Indra Vachaspati. And the other thing, when he went to meet Swami Dayanand, he thought about it like, ये जैसे साधु लाखों साधुओं घूमते रहते हैं बिना कोई विद्या का, वैसे ही कोई साधु है. But when he listened to the full intellectual depth of the discourse of Swami Dayanand, he knew this was a sannyasi above, well above the others. और उसके लिए he had so many discussions with Swami Dayanand Saraswati. In the end, he said to Swamiji, Swamiji, you've cleared my doubts, but I still, मेरे अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं जागी, श्रद्धा नहीं जागी. It has not aroused the faith, the devotion in God. ऋषि दयानंद जी बड़े अजीब से जवाब देते. I can clear only your doubts and the problems that are logical in nature. जब तक ईश्वर कृपा नहीं होगी तेरे अंदर में ईश्वर भक्ति
और ईश्वर में श्रद्धा जागेगी ही नहीं. So you need to be patient for the grace of God. तुम्हें पुरुषार्थ करना है. You have to continue putting up the efforts. And he continued. Going back to another episode in his life, where that shows the distinction he could make between others and Swami Dayanand Saraswati. एक बार एकादशी व्रत पे उनके परिवार में वो परंपरा थी कि ब्राह्मणों को खिलाया जाए और उनको कुछ दान दिया जाए हर एकादशी. पिता ने कहा बेटा तू जा करके कर लो. उसने कहा नहीं. पिता ने पूछा क्यों? उसने कहा ये ब्राह्मण थोड़े है जी, इनके पास न तो ज्ञान है न तो आचरण है, कुछ भी नहीं है, बस नाम मात्र ब्राह्मण है. He contested the father's instructions and the father couldn't tell him any proper answer. Real Brahman, intellectual of exemplary conduct, engage in disseminating true knowledge. Whereas जो ब्राह्मण आए थे वो तो लोगों को अविद्या अंधकार और अंधविश्वास में डुबा रहे हैं. Brahman are those who live a life of generosity, not a life of gluttony. अपरिग्रह के आधार पे जीते हैं, न परिग्रह के आधार पे. And those who live spirituality as spiritual reality in life. Can I get it? It's running. चल रहा है ना? उसको शेयर कर ना बंद करके फिर दोबारा. Okay, let me continue with this. Put the focus in mind. Okay, thank you. Still the glitches of Zoom technology, so we have to bear with it. Please bear with me. Swami Shraddhanand, born on February 22, 1856, and his demise December 23, 1926, victim of terror attack. Childhood names, Munshi Ram and Brihaspati. Let's look at the names and how we realize them. Munshi means learned record keeper. And he became so learned, in spite of being a lawyer, he went into the depth of the Vedic knowledge. Purna Vedwan. Record keeper, he had good qualities and very sharp, very shrewd on whatever he argued or whatever he endeavored and brought them to fruition. Munshi, one with mastery over languages, that's from Persian. And he was from Punjab, where the Persian language was famous. The other name given to him was Brihaspati, सबसे बड़ा. महर्षि दयानंद के बाद अगर आर्य समाज में कोई दूसरा सबसे बड़ा है तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी है. There would be no argument in that. And Vanprasth Diksha जब लिए तो he was known as Mahatma Munshi Ram. And remember, Mahatma, Manasyanyat Vachasanyat Karmanyanyat Duratmanam Vanasyekam Vachasyekam Karmanyekam Mahatmanam. I've been repeating this shlok so many times in front of you. Mahatma is the one who has harmony between thoughts, words, and actions. And Swami Shraddhanand, as sannyasi, he chose that name to reflect his persona, अपने व्यक्तित्व को. क्यों? क्योंकि कहता है सब कुछ जो मैं करता हूं बड़े श्रद्धा और ईमानदारी के साथ करता हूं. Unshakable belief in truth and faith in all actions. That's why हम लोगों के बीच में जब बच्चे का नाम रखा जाता है अर्थ पूर्वक रखा जाता है, so that at least that person tries to live to the expectations, to the meaning of what the name is.
I've already talked on that, bitterness to religion. He emerged as one of the prominent disciples of Swami Dayanand Saraswati. और महर्षि दयानंद के लक्ष्य जो महर्षि दयानंद ने कर नहीं पाया गुरुकुल को दोबारा स्थापित करने के लिए उसने कर दिया. He started reconnecting people to the authentic knowledge of the Vedas, the root of Sanatana Dharma. Revived the defunct traditional Gurukul system for both boys and girls. Forging why Gurukul के माध्यम से सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन आचरण के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति बने, वो आर्य बने. Noble in thoughts, in words and actions. Noble in gun karma स्वभाव. गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ बने. Character, actions and nature. Connecting people to the Vedic ideals and that in their national outlook. His autobiography, Kalyan Marg Ke Pathik, dedicated to Swami Dayanand Saraswati. Kyun? Because that was the person who triggered the desire in him to re-engineer his life with meaning and purpose. Kalyan Marg Ke Pathik mein, he's so truthful. जो भी गलत काम किए उन्होंने वहां पे लिखे. If fell into gambling, wine, womanizing, सब लिख दिए. सामान्य व्यक्ति क्या करता वो सब छुपा लेते ना. This shows the shraddha of this person towards truth. Can we be like that? No skeletons in the cupboard in terms of modern management. Atmanirikshan. There's a movie on YouTube, Ahvan. If you look at it, you can see he sits down every afternoon for Atmanirikshan to measure, to gauge what he has done during the day, whether it's still on the path of Dharma. And that really helped him to bring more brilliance to his personality. Truth, honesty, austerity, serenity, that earned him respect, both in the social and political field. And that's the real conversion, not the religious conversion that occurs in this world. Rather become Manurbhava, truly human beings. Because why? In the name of religion. Nowadays, superiority of so-called religions. They cover up what? The genocides, the crusades, the jihads, the looting, the plundering, the rapes, and so many things that was committed. This is well done to cover up. Let's understand. We need to go into the depth of real history. Don't have a blind eye on secularism. And if you look at that, if you watch that movie, Ahvan, you will learn from it. At one point in time, Dalit को 50% हिंदुओं के बीच में और 50% मुस्लिम के बीच में बांटा जाता है, जाने के लिए प्रस्ताव आया था. He fought against it. इसलिए क्या गाय बकरी है, भैंस है, या कोई सामान्य वस्तु है जो हम बांटेंगे? And that started growing. That bred hatred among the Muslims because he resisted that the Dalits be divided. And he brought another thing. When he linked himself to the call of Swami Dayanand to live and preach the ideals of Vedic Dharma and serve the Arya Samaj, he founded various institutions. Gurukul Kangri is one of them, but we have many more. We have Gurukul Supa in Navsari. We have Arya Kanya Gurukul in Jalandhar and a few others. He also spearheaded so many journals, magazines, where he was
the chief editor, मुख्य संपादक वही थे. And this was surprised both the British and those who were converting Hindus to Christianity and to Islam. That is where that hurts the most. शुद्धि आंदोलन, जिसको आजकल घर वापसी के नाम से जानते हैं. This is no new thing in this world. शुद्धि संस्कार करा करके लोगों को दोबारा उस सनातन धर्म से जोड़ने के लिए पूर्ण प्रयास किया. And look at the beauty of things. The person to whom he gave the title of Mahatma, Mohandas Karamchand Gandhi, went to visit Kangre Gurukul as Mr. Gandhi and came out as Mahatma Gandhi. The title was given to him by Swami Shraddhanand. And that same Mahatma Gandhi came to him to ask him to stop the Shuddhi Andolan, just because of vote banks and appeasement politics. But he said, if others are able to convert the Hindus, हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन करके दूसरे कौम में ले जाया जाए, हम दूसरे लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे, उनको वापस ला रहे हैं, क्यों दुखी होना चाहिए? गांधी जी ने वो अवसरवादी पॉलिटिक्स उसके सामने रख दिए. स्वामी जी, हम तो राजनीति वाले हैं, आपको समझ लेना चाहिए. This is where he parted ways with Gandhiji and parted ways with the appeasement politics and the vote bank politics. That's the beauty of this personality. He could have become a hero by just accepting these things, but no. आत्मा के जो अंतरात्मा की जो आवाज है, उसके अनुसार उसने काम किया. Valiant sannyasi who served people without distinction of gender, caste or creed. और उसके लिए मुस्लिम लोगों ने उसको बुलाया. कहां पर? The eminent mosque in India, जमा मस्जिद दिल्ली का. और उसने वहां के मस्जिद में वेद मंत्रों के साथ अपने मुस्लिम लोगों को राष्ट्रवादी बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरणा दी. And when that was published in the newspapers, किसी न्यूज़पेपर को गांधी जी के पास ले गए, you know what was his reaction? I'm not blaming Gandhi ji, I'm just putting the facts as it is. उसने बताया, पिक्चर तो बड़े सुंदर है, that's all. क्या करें? Led by example as a role model, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, लोगों को इकट्ठे करके मोर्चा निकाले, ब्रिटिश जो कमांडर थे उसने he ordered people to shoot. Swami Shraddhanand came forward. He said, ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं लीडर हूं, अगर शूट करना है. उसने अपने ऊपर से शॉल निकाल करके कहा, छाती पे मार दो गोली. यहां तक अंग्रेज कमांडर को हिला दिया by this attitude. Shoot him but not the protesters because he was the leader. आजकल के कहां ऐसे लीडर को मिलेंगे? जो ही प्रॉब्लम है तो लीडर सबसे पहले भाग जाएगा, like the rats in the boats. Generally, I'm not talking of everybody. He was the architect of the historic Congress session at Amritsar. जलियांवाला बाग का जो कांड है ना, हजारों व्यक्ति मारे गए थे in a closed space, and those people who had not even a lathi in their hands. Peaceful protest. सब लोग डर गए थे, राजनीति वाले नेता भी डर गए थे,
कि हम अपने अधिवेशन कहाँ करें, Swami Shraddhanand came forward and said, I'll lead. And at the same conference, he was the first person to use the word Dalit. Dalit शब्द किसी ने पहले इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे. And this is where he started the program of eradication of untouchability. दलितों के घर में जाकर के भोजन करते थे, उनके साथ बैठ करके बातें करते थे. Challenging people, there's no harm in sitting with people like us. बिछड़े हुए लोग हैं, इसको एम्पावर करने के लिए प्रयास करें. And he withdrew his support due to ideological differences. He didn't give way to appeasement politics, which was detrimental to the majority community in India. He was a frontliner of the Arya Samaj movement, and he made this Arya Samaj a center of power. You know, जब भारत में पहले चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के से थोड़ा पहले, 2/3 of the MPs in Lok Sabha were or had the influence of Arya Samaj. इतिहास कुछ और होता अगर Sardar Patel would have been the prime minister. And the influence was so powerful. Sardar Patel और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में ये बताया जाता है कि अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए उनके सेक्रेटरी आया तो वो ड्रॉअर करके खोल करके ढूंढ रहे थे. सेक्रेटरी ने बोला, आपके कलम के, आपके मेज के ऊपर कितने कलम है, एक लेकर के साइन कर लो. उसने कहा, ये नहीं, ये मेरा निजी कागज है, मेरा निजी कलम मेरे ड्रॉअर में है, उससे मैं साइन करूंगा, ये सरकारी वाले कलम से नहीं. कितने ब्रिलियंट इन्फ्लुएंस स्वामी श्रद्धानंद जी के थे. एंड द आर्य समाज. Do we realize the exemplary practical life leading by walking the talk? Eternal inspiration, unfortunately victim of a terror attack perpetrated by misguided person Abdul Rashid on December 23rd, 1926. In 4 years, we'll be celebrating the 100th death anniversary of Swami Shraddhanand. And we'll be celebrating in a year, 2 years' time, 200th birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati. And in 2025, 150th anniversary of establishment of Arya Samaj. So good to remember the stalwarts, so many of whom the pictures are here. And we need to celebrate that with pomp. Because celebrations of the lives of ऐसे महान हस्ती के जीवन को हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे अंदर से दूसरे तरह के प्रेरणा आते हैं कि हम भी कुछ करें. That is where we'll be inspired. Amar Balidani will ever be remembered because he stood by, he stood up and he stood by for Dharma, Sanatan Dharma, Hindus and Hinduism, and India as a nation. A price he paid dearly by his life for his Shraddha and his unswerving faith and beliefs in truth. सत्य पे उनकी अटूट श्रद्धा. At least let's emulate this great
पर्सनालिटी, 5%, 10%, 15%, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम प्रयास करें। The marvel of it. When he left this world, I tried to go into the homage paid to Swami Shraddhanand. I just took a few sentences here and there. दयानंद की भट्टी में ईंट, a fire brick in the furnace of Maharishi Dayananda Saraswati. He emerged with a fiery zeal to serve the cause of Arya Samaj and Sanatan Dharma. गुरुकुलीय व्यवस्था शुद्धि आंदोलन का गौरव। He was the first to toe the steps of Maharishi Dayananda Saraswati, establishing the Gurukul system, but also शुद्धि आंदोलन। लोग कन्वर्ट होकर के दूसरे कौम में चले जाते थे और हम इनके प्रति और डिस्क्रिमिनेशन करते थे। He said, no, बिछड़े हुए लोग हैं, इनको वापस लाओ जी। So he became the crown jewel of the Gurukul system of education and the Shuddhi Andolan, Ghar Vapasi, return of people misled by conversion. मन, वाणी और शरीर से ऋषि परंपरा को साकार किया. Proved his mettle by living as per the teachings of the Vedic seers, the rishis, and the teachings of the Vedas. अपने विचारों और कार्यों से समाज को नया दिशा दिया. A role model giving new direction to society through his thoughts, through his words, and through his actions. ऐसे आदर्श महापुरुष जिसके जीवन में हर एक शब्द, घटना व कार्य पत्थर पे लकीर जैसा बन जाता था. An ideal statesman in whose life each word, incident or action left imprints like marks on stone. निंदा, बहिष्कार, अपमान भी हुआ, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा. Unmoved by critics, blame, rejection, defamation, he was focused on the objectives. That was a brief on the towering personality of Swami Shraddhanand ji. इसलिए कवि ने क्या लिखा? धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया. Referring to Swami Shraddhanand, श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई थी गोलियां. And you know that episode of the terror attack. Abdul Rashid came, knocked the door, and he said he wanted to meet Swami Shraddhanand ji to convert to Hinduism. He had a gun loaded with 4 shots. Swamiji was sick, and the person attending to him said to Abdul Rashid, Swamiji बीमार है, आपसे नहीं मिल पाएंगे. Swamiji ने आवाज सुन ली तो उसने कहा, अंदर ले आओ उसको. क्यों? गुमराह व्यक्ति को दोबारा हिंदू बनाने के लिए. उसने कहा पानी लाओ इसके लिए. Servant went to bring water, और इसने गोली आर पार कर दिया स्वामी जी के शरीर पे.
That was a well-planned attack, जिसको आजकल की लैंग्वेज में टेरर अटैक बोलेंगे. Just watch that movie, Ahvan, on YouTube, The Call of Truth. It's a biopic on Swami Shraddhanand. They tried to do it as authentic as possible. It's on YouTube. It lasts for about 1 hour, 15 minutes. थोड़ा सा patience लेकर के उस movie को देखें. Be inspired with that movie and let's emerge to be Nishkam Sevak of Arya Samaj. Because संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है. और फिर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रह करके सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए. Because our welfare is connected to the welfare of everybody around us. We are no one-man island. And this is where Swami Shraddhanand emerged. Let's try to toe his footsteps. That would be the real homage, the real Shraddhanjali to Swami Shraddhanand ji. ध्यान के लिए धन्यवाद. सभी को नमस्ते. नमस्ते. आज जो सब लोग यहाँ आए हैं और जो हमारे साथ जूम और यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत स्वागत. थोड़ी सी सूचनाएं करूँगा. जैसा कि आप सभी जानते हैं, शोक समाचार, जैसे आचार्य जी ने पहले भी बताया था, हमारे आचार्य प्रवीण जी, जो इस आर्य समाज के वन ऑफ द फाउंडिंग members, one of the 5 founding pillars, he breathed his last on the 20th, this last week, and all his family members, Rita ji, his kids, Sanjay and Isha, were with him, and we're grateful that they could be with him at that time. There will be a Shanti Yajna in his remembrance on January 22nd. Let me try, and then so I'm not sure if you can see on the screen, but that's on 22nd. And I would also Acharya ji ne bahut, I learned a lot on Swami Shraddhanand ji today. I also want to, one of the other things which we tend to forget is historically, about 300 years ago, this was the week when Guru Gobind Singh's whole family got martyred. All his four sons were, दीवार में उनको चिन दिया गया था. So it used to be celebrated as Shahidi Saptah or Shahidi Week in old days. And I was just reminded of that a couple of days back. One of my friends, and I am honestly, I did not know that, but that is one of the things, right? Those people who gave their lives for defense of the Sanatana Dharma. So moving on, I think next week is Sunday, jo hai 1 January ko, that will be our New Year's Havan. It will start slightly delayed at 11 o'clock. There will be Purna Ahuti. It will be everybody will be able to give Ahuti on that day. And please join us and come. It's slightly late, so even if people are have enjoyed New Year's
parties, they can still come. And if you want to be Yajman, please email to yajmans@arsmajhouston.org. Thank you. As we have been mentioning in the past, our schools, both Sanskriti School and Montessori School, they are open for enrollment for the spring session. VSS Global is also, which is an online session only, is also open for registration for the next semester. So if anybody wants any more information, they can either go to our website or contact Acharyaji here. And for those who are outside of Houston, the VSS Global is a forum for anybody anywhere in the world to be able to join if they want their children or grandchildren and anybody you know who will be benefit from that. So please encourage them. Our adult education classes will also start the week of January 23rd. And come back to our regular programs. So we will continue. This is continuing. We always have yoga sessions on Saturday and Sunday mornings, followed by the weekly satsang on Sundays and ending with prasad at noon. If we would encourage everybody to subscribe to our newsletter by going to arsmajhouston.org and subscribing there. You can also there's also a link for donation if anybody is willing to. And with that, I would request everybody to kindly rise for Aarti. जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हारे शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तो सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति।
जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जो की संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। Switch to the mic, please. Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। नमस्ते। आज सब शांति यज्ञ में एकत्रित हुए हैं हमारे प्रिय डॉक्टर वेद अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि देने। मैं आर्य समाज की तरफ से, आप सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सुगति मिले और हमारी बहन संतोष जी को बहुत अधिक स्ट्रेंथ मिले। She's got 2 beautiful children and many grandchildren. I am pretty sure they will take very good care of her. So आपके लिए
बहुत बहुत शक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं हम देव भगवान से। और थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। जो बोले सो भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की, महर्षि दयानंद जी की। ओम का झंडा, आर्य समाज, वेद की ज्योति, प्रणव ध्वनि। पूजन मंत्र। ओम अन्नपते अन्नस्य नोदेयनमिवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। O God, giver of food, give us energy producing food that brings us good health, free from disease. Bless those in the food chain and bestow vigor upon all living beings, bipeds as well as the quadrupeds. Om Shanti Shanti Shanti। मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दें। जिस सर्वव्यापक ईश्वर ने हमको आज का समय दिया इस सत्संग में भाग लेने के लिए, माता पिता जिन्होंने संस्कार दे करके पालन पोषण करके हमें यहाँ तक लाए, गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से और ऋषि मुनियों ने वेद ज्ञान को विस्तार करके, अंत में जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस यज्ञ के करने कराने में सहयोग दिया, सबको धन्यवाद, सादर नमस्ते, and special thanks to the Yajman of today, Srimati Santoshji Agarwal. And remembering the life, just I'll add another last word. I was talking to somebody yesterday and he reminded one thing. Dr. Vedji stood tall in humility, in family, in society, and in life in general, and especially within the Arya Samaj. So we'll pray to God to give the family strength and आत्मा को सद्गति ईश्वर दें। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते।